Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening. Uh, Hope you all are doing well. You're staying healthy, staying safe, and rooting for Sushant Singh Rajput. आज का ये session, I am definitely gonna be a little bit more rude than normal, क्योंकि बहुत सारा you know एक गुस्सा एक अंदर भर गया है looking at how social media has been acting today. उसके बारे में तो बात करेंगे बट सबसे पहले आई रियली वांट टू टेक अ मोमेंट दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो कल रचना ने जैसे बताया था, so many people who've lost their lives in the last few days, few weeks. That was very, very, very sad. And the second thing, which I really want all of you to please keep Srinivas Patnaik in your prayers. I heard, he lost his mother. You know what, Srinivas, I see you in the chat, so why don't you please come? I don't know what you want to be rude, but I don't know what you want to be rude about. So please out. This is the link for you. I'm only gonna take Srinivas for now. For anyone else, we'll take you. We'll definitely take you later. But right now, Srinivas के लिए ये link दिया है मैंने. So Srinivas, if you want to say something, I don't know आप किसके बारे में rude बात करना चाहते हो, please come. And hello Pradeep bhai. Yeah, we'll talk very soon, but Srinivas, please. Okay, I see Srinivas here, so please go ahead. Hello Srinivas, कैसे हैं आप? Namaskar, Varun ji. I hope I'm audible. Yes, you are. Just 15 days ago, I lost my mother, and मैं क्या करूँ, रो हंसूं, फील करूँ, फील ना करूँ, I am unable to express. आपको पता है, I was back from Muscat to take care of my parents, and suddenly my mother. Um, sorry, just give me a second. Yeah, I understand it. I'm सबसे पहले तो Srinivas, हालांकि कहते हुए it's difficult for me to say, but I'll still say I think you're a very fortunate son, and you're a very blessed son. Not many kids are able to be there with the parents. I'm assuming, and I'm, correct me if I'm wrong, but you sacrificed your career, you sacrificed your things to be with your parents, and that is not easy. हम लोग अपने career के लिए, अपने future के लिए बहुत कुछ करते हैं, and then we end up, forgetting कि हाँ, एक responsibility होती है for our parents. You being that son, you moved out, you came back to your mother, your parents. So it's very sad to hear what happened, and I really, I can only, send you positive vibes. I'm sure it is not easy. So sorry for your loss, but may her soul rest in peace, and may she always keep on sending you the blessings and the love, because you deserve a lot more for what you've done. Varun bro, you know what? I promised her that I'll not let her um, breathe go down as a first aider, as a person belonging to first aid. I tried 2 times. I have given CPR, I mean cardiopulmonary resuscitation, but I lost her. Uh, I don't know where she is, but she'll be thinking that yes, my son has did that. मैं अपने आप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ वरुण ब्रो. Please don't take it otherwise. She she will be thinking that हाँ इसने try किया, इसने ये किया, वो किया. My father also was standing behind me the day when I lost my mother. Now I'm trying to. I never cried. You know what, वरुण ब्रो, वरुण भाई, मैं आज खुल के बोलता हूँ वरुण भाई.
I never cried, you know. I just cried 2 times. The time when जब मैंने उनको मुखाग्नि दी थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे पास नहीं थे वो टाइम पे, पापा चले गए थे, एंड आई एम क्राइंग whenever my father is not there, because अगर मेरे पापा मुझे रोते हुए देख लें ना, वो भी टूट जाते हैं. आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा Yep. हूँ. So keeping that things apart, मैं मैंने आपको बोला आई वांट टू बी रूड टुडे, है ना. एंड प्लीज वरुण ब्रो, अलाउ मी टू बी रूड टुडे विथ योर परमिशन, वरुण ब्रो. Sure. Please go ahead. Please. मैंने कुछ सेशंस देखे, यूट्यूब सेशंस देखे, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं तू ये है, तू वो है, तूने ये किया, तूने वो किया. यार आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए मेरे को. ओके, सुशांत सिंह सर के मूवमेंट के बारे में छोड़ दो. आपने लाइफ में क्या अचीव किया? आपने लाइफ में क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए? यू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, राइट? इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं. वरुण ब्रो, सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह के बात कर रहा हूँ. आपने क्या किया? आप इसके बारे में उसके बारे में बोल रहे हो. आपने क्या किया? You pretend to be Arnab Goswami. Can you be Arnab Goswami in your life? In your lifetime, can you be like Arnab Goswami? And can you do something which he has done? You people, you freaking people, मैं bad word use नहीं करना चाहता. Freaking people, you are saying he has done this, that person has done this person has done this. I am a doctor, I am an engineer, I am मैं I'm unable to control Varun bro. क्या है? क्या दिखाना चाहते हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? Although I'm in a state not to talk about all this, but I have respect towards SSR, and that is the reason why I'm speaking today. That is the reason why I'm telling these things today. What you have done in this movement, आप क्या जताना चाहते हो? आप किसी को तू बोल देते हो, किसी को बिना रेस्पेक्ट के बात कर देते हो, किसी को बोलते हो तूने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. क्या क्या दिखाना चाहते हो आप लोग? I don't want to address any name. I don't want to address any person. लेकिन मेरा एक ही सवाल है. And I tell you, Varun bro, I have subscribed one of those guys, and now I have unsubscribed, and I don't want to see his face, or I don't want to see his sessions on YouTube. The way I was dealt with when I tried to put my point, really disgusting, Varun bro. People, they pretend like something else. यार क्या क्या आप प्रूव करना चाह रहे हो? I have faced that situation. मम्मी मम्मी मेरे से 2 घंटे पहले बात कर रही थी, 2 घंटे बाद she is termed as dead body. What you are trying to prove? What you are trying to say? What message or what thought you are going to deliver to the society? Is this the thing? The day when मैंने जिस दिन मुखाग्नि दी मम्मी को, मेरे आंखों के सामने एसएसआर था, थे, इनफैक्ट थे. आई वॉज थिंकिंग दैट उस दिन उनके पापा ने उनको मुखाग्नि दी, और वॉट एवर इट मे बी, फर्नेस में दिया या जो भी है. व्हाट वाज दैट फादर्स फीलिंग? यू नो वरुण ब्रो, व्हाट आई मीन टू से. मैं वो दौर से गुजरा हूँ. रिसेंटली मैंने अपनी मम्मी को मुखाग्नि दी है. मैंने और मेरे पापा ने मिलके मुखाग्नि दी है. माय फादर इज ऑलमोस्ट लाइक 72 प्लस, एंड मेरे लिए मेरे पापा को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था. मैं आज भी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल हिम. द टीयर्स, द पेन, the sadness, I'm still trying to control him. So Sushant Singh Rajput
सर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो लोग ब्लेम कर रहे हैं और उनको जो लोग बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज द पेन? मैं आज बेशर्म होके बोलता हूँ वरुण ब्रो, मैं अपना जॉब छोड़ के आया, मैं अपना कैरियर छोड़ के आएगा। मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। कितने हैं वो करके आ सकते हैं? लेट मी सी, लेट मी नो। आप अगर वो नहीं कर सकते, आप क्या खास अपने अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच नहीं सकते, आप खास सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात कर सकते हो, उनके बहनों के बारे में बात कर सकते हो, उनके फैमिली के बारे में बात कर सकते हो। हाँ, और आप मिमिक्री कर रहे हो, क्या घंटा मिमिक्री, बाहर में गया आपका मिमिक्री। आप क्या सोचते हो अपने आप को? हाँ? मैंने मैंने जिस दिन मेरे मम्मी को मुखाग्नि दी, मैं मेरे दिल में एक ही चल रहा था, अरे यार यही जो मेरी फीलिंग है, यही सुशांत सिंह राजपूत के बरियल के दौरान उनके पापा का फीलिंग होगा, उनके बहनों का, उनके फैमिली। यार आपका फीलिंग फैमिली मेंबर से ज्यादा है। आप फैमिली को, बहनों को बकचोदी कर रहे हो, आपका फीलिंग उनसे ज्यादा है। वॉज सुशांत सिंह राजपूत योर फैमिली मेंबर? आप सबको फेम मिला फैमिली के वजह से। ब्रो, डोंट टेक इट अदरवाइज। श्रीनिवास, मुझे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया था, पर अभी मुझे जैसे एक मैसेज अभी ये आप स्क्रीन पे भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी है ये मैसेज। श्रीनिवास जी, वो पागल यूट्यूबर की बात का इतना बुरा मत मानो, लूजर्स की बातों का बुरा नहीं मानते। और मैं और भी देख रहा हूँ श्रीनिवास जी, छोड़ो उस पागल यूट्यूबर को, ही इज वर्थलेस। तो मुझे लगता है किसी सेशन पे कुछ हुआ है जो जो शायद आपको डेफिनेटली, आई मीन, मैं क्या बोलूं, एंड ऑफ द डे ये ट्रोलर्स, अब्यूजर्स, ये जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिस्टिक प्लेजर के लिए यहाँ पर इस सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नॉट फील ऑफेंडेड और सैड अबाउट इट। बट वन पॉइंट यू ब्रॉट वेरी, वो कहते हैं ना, शायद एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। श्रीनिवास, यू जॉइनिंग दिस सेशन, इस सेशन पे मैंने शुरुआत में ही जैसे बोल दिया था कि मैं खुद ही थोड़ा सा आज गुस्से में हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था किस तरह से लोग प्रियंका दी को अब्यूज करने पे लगे हुए हैं इस टाइम पे अभी भी। एंड यू एक्चुअली कम आउट एज फॉर मी राइट नाउ, एंड अगेन आई एम नॉट just saying it for the heck of it, but जैसे सुशांत ने शायद तुम्हें भेजा है श्रीनिवास, to say few things. You losing your mother, it is not easy to come on a YouTube session to talk. इस पे भी लोग ये जो useless abusers हैं और ये जो useless accusers हैं, इडियट, इडियट बोलिए वरुण जी, इडियट अरे बोलिए। जो गाली दो वो कम है भाई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये इस पे भी इशू बनाएंगे कि after losing your mother you're here on a YouTube session and all that stuff. But I'll tell you, I think सुशांत ने शायद तुम्हें यहाँ भेजा for speaking out these things to show support for the family. And you very very rightly said कि अपनी मदर को लूज करने के बाद जो आपको फीलिंग है, द सेम काइंड ऑफ फीलिंग you can now feel how Sushant's family would be feeling for Sushant. ये वो गधे, ये वो कुछ वर्ड्स आपने यूज कर लिए, पर आज मैं जनरली अपने सेशंस पे इस तरह के वर्ड्स या नहीं यूज करता। पर ये जो गधे जो सुशांत की फैमिली और बाकी लोगों को भी जो अब्यूज करते हैं, जो बिल्कुल ही माइंडलेस इडियट्स एंड एसोल्स होते हैं जिनको मैं कहता हूं, these guys have nothing else to do just to get sadistic pleasure by accusing people, abusing people, ready to break this movement at any cost, बिना मतलब के, बिना सिर पैर के, families and what not, सबको abuse करना। I think you came here to very clearly say it out, the pain that you feel right now for your mother, the same pain or even worse pain the family would be feeling for Sushant. And उस टाइम पे अगर सुशांत की सिस्टर्स को कोई अब्यूज अक्यूज करता है, दैट शुड बी समथिंग दैट दीज इडियट्स शुड स्टॉप। बट
किसी ने आपको जो भी अब्यूज किया, अक्यूज किया, या whatever was said to you, I think all I can say is, ignorant fools समझ के इनको, you call them idiots, just think of them as an ignorant fool and move on. You have way, मैं बता रहा हूँ, श्रीनिवास, इट्स नॉट इजी. मैंने खुद ही एक्नॉलेज किया है. अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ के आना, बॉस. मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, स्क्रीन पे बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके स्क्रीन के आसपास घूम रहे होते हैं, दे आर लिटरली अब्यूजिंग. अपने आप को कई बार वो लोग म्यूट करना भूल जाते हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर वो चीखते हुए भी सुने गए हैं. ऐसे वो लोग हैं जिनको अपने फादर मदर किसी की कोई इज्जत नहीं. ये लोग क्या तुम्हें समझाएंगे बॉस? इन ये दे डोंट इवन एग्जिस्ट. सो प्लीज डोंट माइंड, डोंट इवन थिंक ऑफ देम. But I am really, really, again, for your loss, I'm really sorry. And this is, I'm sure, I am very, very confident. I've heard you in the past, and I know your heart is at the right place. You did something for your family, for your parents, and I'm sure your mother, wherever she is, she's just sending you all her love and blessings, and she will continue doing that. So thank you for this. वरुण This ब्रो, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में Sure. इंटरप्ट कर रहा हूँ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माय सिंसियर अपोलॉजीज फॉर दैट. ये जो वेले लोग हैं, ये जो बीच बीच में आके मैसेजेस वगैरह करते हैं, यूट्यूब सेशंस करते हैं, भाई आपको पता है पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्या होता है? आप खोलते ही शुरू हो जाते हो, सम ऑफ द यूट्यूबर्स, आप खोलते ही शुरू हो जाते हो कि बहनों ने ये क्या, बहनों साले, sorry for my wording. Do you know what does it mean to lose a person in family? Yeah. मुझसे पूछो. I'm there to speak. मैं आपसे बात करूंगा. आई एम ए ट्रेनर बाय प्रोफेशन, आपको भी पता है वरुण ब्रो. एंड मैं आपसे आज ऑनलाइन पे सबके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ. आई वांट टू ट्रेन पीपल ऑन फर्स्ट एड. मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी कुछ फर्स्ट एड ट्रेनिंग के वीडियोस किए हैं. मैंने आपसे पर्सनल भी कांटेक्ट किया है. दैट इज नॉट फॉर एनी रिकॉग्निशन और दैट इज नॉट फॉर एनी फेम. मेरा ये कहना है, जैसे मेरी मम्मी जब गुजर गई, मैंने 2-3 बार ट्राई किया. 2 बार उनका ब्रीदिंग वापस आया. तीसरी बार आई वॉज अनेबल टू रिवाइव हर ब्रीदिंग. लेकिन हर फैमिली में, हर घर में एक बंदा होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए. आप इसके बारे में बताओ ना. आप क्या बता रहे हो? ये वी गार्ड है, वो वरुण है. और जब आप ऑनलाइन, वरुण ब्रो, मैंने वो सेशन भी देखा था, वो वीडियो भी देखा था जहाँ पे somebody pretended to be अर्नब गोस्वामी. आप बस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, आप आंसर्स नहीं सुनना चाहते. मतलब क्या है? मतलब आंसर्स आपके अगेंस्ट में जाएंगे, इसलिए आप आंसर्स सुनना नहीं चाहते. और जिनको आपने अपने लाइफ पे बुलाया, जिनको आपने नवाजा, आज वो लोग खराब है. ब्रो, आई एम रियली, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने को. आई एम रियली हैविंग नॉट टीयर्स, ब्लड्स इन माय आईज कि सुशांत सिंह राजपूत का जो असैसिनेशन था, मैं तो असैसिनेशन ही बोलूंगा, वो साला ये लोग के समझ में नहीं आया. ये लोग खाली अपना फेम, अपना फ्लैगशिप देखने देख रहे हैं. वरुण ब्रो, Exactly. You said it right. माफ करें अगर Absolutely. मेरे वर्ड हार्ट Not at को. all. Not at all, Srinivas. और जो आपने सुना और आपने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, again, I'm not sure, क्योंकि मुझे exactly नहीं पता, and we should definitely talk about it offline कभी. But सिर्फ इतना कहूँगा on behalf of the SSR warriors family and everybody on social media जो इस मूवमेंट से कनेक्टेड है. I apologize कि you also had to go through that, and you're not the only one. ये चीज मैंने कल एक सेशन किया था, और उस सेशन पे भी मैंने काफी लोगों से. मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ. एंड आई लव टू कट यू बिकॉज यू नेवर अपोज्ड इट.
मैं हंस रहा हूँ. यू नेवर अपोज्ड इट. आरडीएक्स सर आए थे सेशन पे, उन्होंने अपना व्यूज दिया. रियली आई एडमायर आरडीएक्स सर, आई एडमायर आरएनएस जी, आई एडमायर another ma'am, I'm forgetting her name. I admire them all. You know what? They have set some benchmark. लोग, मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझे बेंचमार्क के निकनेम से बुलाते हैं. दे हैव सेट ए बेंचमार्क. आरएनएस जी को मैंने वो दिन बताया, शी वाज रियली फीलिंग बैड एंड ओके. लेट, ये दुनिया का सच है वरुण ब्रो. पैदा हुए तो मरना भी एक सच है, लेकिन द वे पीपल सफर थ्रू, ये बहुत बड़ी बात है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आप हो गए, स्टाइल हो गए, या आप दोनों को ही मैं देखता हूँ ज्यादातर. आपको और स्टाइल को मैं देखता हूँ, एंड आई टेक नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम यू बोथ. और कुछ कुछ सॉरी फॉर माय वर्ड्स अगेन, सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्या प्रूव करने को कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो. आप ये कोशिश करो कि मैं ठीक हूँ वो गलत है. यारा, ये दुनिया में भगवान ही ठीक है और कोई ठीक नहीं है. आप बोल दो आज आप में मन मुटाव है, मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे साथ मेरे चाचा जी का मन मुटाव है, मैं उनके बारे में गलत बोलूंगा. मैंने कुछ गलत फहमी पाली है, उनके बारे में गलत बोलूंगा. लेकिन वी ऑल आर फोकसिंग टू अ सेम टारगेट, टू गेट जस्टिस. आप वो मैटर को लेके इसके साथ रिलेट करोगे, उसके साथ कंपेयर करोगे, व्हाट द हेक यू आर टॉकिंग अबाउट. मैं वर्ड यूज नहीं कर पा रहा. व्हाट द हेक यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेक यू आर मिमिकिंग अबाउट, व्हाट द हेक यू आर you your point is. Come on, if you want to prove the point, come on, face to face, man to man. और उस दिन जिस दिन मैन टू मैन होगा, I swear on my dead mother, I swear on my family which I am taking care, Varun bro, I am the first person to stand behind you. Maybe in front of you. मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ. मैं आज भी ये बात बोलता हूँ, अगर मोदी जी बोलते श्रीनिवास चलो बॉर्डर पे तुम्हारी जरूरत है, तुमको गोली खाना है, आई एम रेडी फॉर दैट. आप में से कितने उसके लिए रेडी हैं? आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू. I'm saying about those persons who are saying that India is great, Sanatan Dharma is great, we are supporting India, we are supporting this, we are supporting that, blah 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 blah. I'm telling about them. आप में गोली खाने की क्षमता है, I am ready for that. I am ready to take a गोली. आप में है वो क्षमता? सॉरी ब्रो, मैं शायद भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा ही बोल No, गया. absolutely. And I, that's what Srinivas, I've always said. Ye platform is not for, time pass and entertainment and, bitching and abusing. This platform is for everyone to share what they have in their hearts and their minds. And, agar kuch hua hai aisa and it has hurt, definitely deserve, to speak up because it is important. So thank you for coming and speaking up, even though I'm sure you're still not in the right kind of state of emotions and right state of mindset of you know what has happened. So I'm still glad you came because once you leave, I am expand on this topic itself. I think you were Sushant sent. जैसे लोग कहते हैं ना, you were God sent or somebody. You were Sushant sent. You were sent because of Sushant. और सुशांत ने शायद तुम्हें कहा कि maybe you should go and talk on this platform because you have really touched upon the right things, right issues. Without naming names, I'll tell you something. और किसी ने अभी चैट में भी लिखा था, life is very short. And we really need to be very mindful of how we behave with our social media family or generally on social media as well as in person. Recently, आज ही कहूंगा मैं, आज ही, I chatted with someone
someone who has abused me, someone who has uh, body shamed me, somebody who has, done a lot of things, even though I maybe or might have been a little aggressive at couple of times, but still I somehow felt that individual was being harassed a lot just because of हालांकि अगर इसको जनरल सेंस में देखें, आई शुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन कि चलो यार, इस बंदे ने मेरे को अब्यूज किया था, इसने मेरे अगेंस्ट इतना कुछ बोला था और इसको हरास किया जा रहा है, तो आई शुड डेफिनेटली बी हैप्पी एंड एक्चुअली आई शुड जॉइन हैंड्स with the person, the other person who is abusing and accusing him. But me and me being an idiot, I thought it was really going below the belt, and I felt sorry for that. And I unblocked that individual. I messaged that individual. I told that individual, okay, I really Bro, bro, genuinely bro, feel. bro. I हाँ, wanna intervene here. बुलाइए उस I don't want to use a bad word. बुलाइए उसको, okay? And let's be man to man, no? आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलोगे हम कुछ भी सुन लेंगे? Come on, face me, bro. मैं उस दिन जिस दिन आप उसको बुलाएंगे उस दिन मैं आपके साथ रहूंगा and I am ready to speak. Okay, and let that guy come, let him express his thing. I want to see what he wants, what the person or the lady they want to say about family. Let us speak face to face. Let's be man to man. yeah. Sorry if I'm saying anything No wrong, worries. bro. No worries, no worries. We'll see. I don't think it's ever gonna happen around certain people. But मैं जो बता रहा था, उसको I'll just wrap it up. के I realized that life is really short. Keeping all these, things in our mind, I think it will impact you, me, more than these people. So, जो भी हुआ, forget him, forget that topic, move on. Don't even think of going back to such people. These people don't deserve our No, no, time. no, These people, no, Varun, bro. I'm not here to uh, get sympathy. I'm not here to play sympathy not, card. Just yeah, मेरा जो दिल में भड़ास था वो मैं निकालने आया था after 20 days of my mother's departure from this eternal world. मैं वो सब नहीं ये करता. आपको पता है मैं आज तक नहीं रोया. द ओनली रीजन बी मैं अगर रो लूं मैं अगर टूट जाऊं मेरे पापा टूट जाएंगे. दिस इज द ओनली रीजन आई नेवर ट्राइड. आई नेवर सेड एनीथिंग. और ये जो सेशन पर्टिकुलर सेशन है I'm going to show my father that I never cried, Papa. I'm standing behind you. Although you are elder than mother, I'm standing behind you. Whenever, whatever you need, I'm there to do that. And that is the only reason I left my career, I left my things. I don't want to repeat that. I don't want to say this to anyone. But the thing is, I'm there behind my papa. I will stand behind my papa, and whatever happens, whoever abuses me, even in my life, in social media, Varun bro, I'm not there on Instagram, I'm not there on Twitter. Whoever says what after this session, this particular session, I'm repeating this particular session. Whoever wants to make a mimic, who wants to make a parody of this, I'm ready. I'm ready to face. But at the end of the day, I'm standing with my papa. I'm fully dedicated to my family, bro. And I request you today in front of all these guys, I want a chance to conduct some sessions on first aid, on saving people. About that. I have already yeah. forwarded it the Let's do things this, about. Srinivas. Let's do this. Yeah, Uh, yeah. I'm sure you have my number. WhatsApp me, Yes, and let's yeah, let's uh, let's plan that for whatever time that works for you. yeah. And I'm saying it here on the live itself. Okay, we'll do this session whenever you want to do it. We'll make it happen.
I have already spoken to Dubai Tamilian brother. I can speak Tamil, bro, for Sure, your kind information, and Mitras is also. sure. So let's have a session on that. Yeah, But just give me like one we'll to do that. 2 weeks. I want to Absolutely. You recollect ping my me on WhatsApp. papa. We'll talk about it and Yeah, we'll get it done for sure. And once definitely, again, definitely. thank you for coming and thank you for talking and thank you for sharing what was in your heart. And I really, really am sorry again for your loss. May God, No, no bless you problem. forever. No Thank problem. you. Thank you No so much. problem. Thank you very much, bro. Take care. Sat Sri Akal. Sat Shri Thank Akal. you. Thank you, bhai. Thank you so much, bro. All Thank right, you, bro. guys. This was really important. I know. Srinivas. Uh, whatever has happened to you, whatever has happened to on whatever platform, whatever channel, has happened to many more. कल मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को खुद अपनी तरफ से भी आई अपोलोजाइज टू देम बिकॉज देव बीन मिमिक्ड दे हैव उनको भी मजाक उड़ाया जाता है उनकी भी पैरोडी होती है जस्ट बिकॉज दे हैव बीन affiliated with me or they come on the platform या वो बात करते हैं now for the next few minutes I really want to focus on you know uh, going back to what Srinivas said. Priyanka di या Shweta या Mitu di या anybody from Sushant's family, they have lost their brother, they have lost their son, they have lost their blood, and right now they are the only ones. सिर्फ वो ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पेन फेस किया है एंड they're continuously facing that pain. अभी श्रीनिवास बता के गया the pain he's feeling right now after losing his mom. आप ये सोचें एक मदर एक ब्रदर एक फादर you lose anyone, it really hurts. It really hurts for a very long time. यहाँ पर it is very important. It's very important that we understand what Priyanka Di is going through. 2 years. कल मैंने बात की थी 860 plus days and there is still nothing at all around Sushant. मैं आज दिन में एक और वीडियो देख रहा था which I was planning to talk about but maybe tomorrow we'll talk about it, जहां पर the entire media is trying to cover up, support Ria, cover up this case, put blame on everybody and anybody, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो the family हो, चाहे वो uh, even they claimed in that video that Sushant Singh Rajput was a drug addict. Even after all of this nonsense that the PR has done, Priyanka Di has been standing here rock solid for her own brother. We've seen her on this platform as well. We've heard her on the platform. We've heard her on other videos as well. And we can all feel the pain in her eyes, in her heart, in her tone. अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ we don't know what she might be going through, and none of our business actually. And even this movement, उसके अंदर वो क्या कर रही हैं, वो क्या नहीं कर रही, it is none of our business. She knows the best. She knows what to do. She will take what the necessary actions are. I, you, anybody else who is not even qualified to talk about the case, 4 दिन किसी लॉयर को सुन के किसी यूट्यूब चैनल पे, you don't get the experience. Even if you have that common sense, still doesn't make you an expert. मैं आज बता रहा हूँ, मैं for the last few months actually, आई हैव एक्चुअली पहले मैं सुनता था आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनको सुनता था. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन really listening to some of these cases, high court cases. Some of those are on video,
एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. किसी दिन मौका मिला मैं आपको वो केसेस की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा. द वे जजेस बिहेव, द वे जजेस टॉक, यहाँ के मैंने यूएस के देखे हैं, दे आर टोटली डिफरेंट. यहाँ you cannot talk in that tone, you cannot scream at your lawyers, you cannot scream at the the जो proofs लेके आते हैं उनके अंदर अगर कोई issues होते हैं. The way these judges abuse people, including the advocates, is so very surprising and amusing as well. कोर्ट में क्या ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से होते हैं, केस को किस तरह से कैसे एंगल दिया जाता है, आई हैड नो क्लू. वॉचिंग ऑल दीज क्लिप्स, और आप लोग भी जाके ढूंढे यूट्यूब पे जिनको सपोजिडली एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जो स्पेसेस पे जाके एंटरटेनमेंट करते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स खोल के एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, उनके लिए यूट्यूब पे जाएं और हाई कोर्ट के केसेस की वीडियोस हैं, लाइव लॉ और कुछ और भी वेबसाइट्स हैं उनसे, दे आर ऑल देयर. वॉच दोज क्लिप्स, हाउ अ केस प्रोसीडिंग गोज ऑन. आप लोग हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से एक एडवोकेट, अ सीनियर एडवोकेट इज ऑल्सो कुड बी abused, could be harassed, could be questioned by a judge. So Priyanka Di, who is herself, an advocate, I am sure she knows the process. She knows the process. She knows कि क्या हो रहा है केस में, कैसे करना है, what are the protocols. क्योंकि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती के ऊपर the judge can literally rip you apart, can throw your case out of the court, can finish off the case in less than a minute. तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, figure out what are the nitty gritties, technicalities, and then bullshit on social media. It's very easy. ट्विटर पे जाके प्रियंका दी के ट्वीट के नीचे बकवास करके आना बहुत आसान है सबके लिए. Police don't support you, investigation officer handle around 10. Exactly. So absolutely निपुण पाजी, मैं ये केसेस देख के मैं हक्का बक्का रह गया. और मैं आजकल और भी बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहा हूँ, some of the murder cases, some of the smaller cases, and and I encourage people to go and watch it. The point I want to make in this session was, प्रियंका दी को ज्ञान पेलने वाले जो आते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, there is another way of doing it. I'll make your life easy as well, and let's make everybody's life a little easy. आप डीएम में जाएं उनको और उनको सजेशन दें. Be respectful. First, she's a lady. Second, she's Sushant's sister, elder sister. Third, she's going through a lot of hell because of this case, because of the fight that she is fighting, and then because of certain other reasons also जो social media पे चलता है. If you cannot help her, if you cannot support her, and if you still want to be in this movement, तो आप डीएम में जाएं, उनको सजेशन दें. I am sure, as much as I have experienced, I have known, she will hear you out. कई बार होता है, obviously there are thousands and thousands of people who might be DMing them, the family, and DMing her, and she might not be able to reach out to you. But couple of times try it. बकवास लिखने की जगह ट्विटर के ऊपर, उसकी जगह एक सिर्फ इतना लिख दें कि प्रियंका दी, I have sent you a DM and it's important. Can you please respond back? I am really, really confident she will respond back to you if you are making a logical point. If you are abusing her, if you are abusing the family, if you are accusing her, I am very sure कोई भी sane individual जो होता है ना, जिसका दिमाग सही जगह होता है, वो उसको respond नहीं करता, and they try to ignore it. So I'm sure if you are abusing and accusing her and she has seen that, she will not respond to you. So don't expect to get a response for an abuse. But if you continue to abuse her on social media, if you continue to support abuse her on Twitter around her tweets, या अपने नए tweets बना के
और आजकल तो नया ट्रेंड चला है, एक दो स्पेसेस में के बारे में मुझे पता लगा है, जहां पर गुड कॉप बैड कॉप खेला जाता है। द सेम सेट ऑफ पीपल, they will try to show as if they support the family, but indirectly they are kind of pushing the wrong thoughts. So वो सब भी मुझे रिसेंटली ही पता चला कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है. So try to understand, we are not idiots, some of us, and Priyanka Di and the family is obviously not in that category कि उनको समझ नहीं आती. सो उनको सब पता है, वो सब देख रही हैं, उनको हर किसी की हरकत के बारे में पता है. एंड आई एम श्योर शी हैज her own views around certain things, certain people. And as much as I've seen Priyanka Di, when she has to give you back, she will give you back 10 folds nahi, 100 folds nahi, 1,000 folds. So अगर उन्होंने कभी दिया तुम्हें, तो फिर घबराना मत, डरना मत, फिर उसको फेस भी करना. So, end of the day, all I want to say around this issue that's happening for a very long time, if you cannot support Priyanka Di, if you cannot support this family, get out of this movement. There are many, many other things in life. बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे. अपना भी अगर आपने यूट्यूब चलाना है तो बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बकवास करो, नेगेटिविटी फैलाओ, एंड मूव ऑन. लीव द फैमिली एंड लेट देम हैंडल इट. मैंने अभी स्पेस पे भी एक चीज बोली थी और मैं यहां पर भी बोलता हूँ. दिशा के केस में, एंड थैंक्स टू केडी जी, जिन्होंने ये स्पेस में भी बोला था, एंड आई एम गोना ऐड टू व्हाट ही सेड. बट केडी जी ने भी ये बोला और बहुत सारे लोग और भी बोल रहे हैं, और मैं तो इसको डेफिनेटली आई एम गोना कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. दिशा के केस में द फैमिली सेड, प्लीज लीव अस अलोन. We have no foul, we don't see any foul play between us. We don't want any, people to harass us, the media to harass us, the leaders to harass us, and leave it to us. We are okay. We really want her, to finish off the topic and not fight that fight. अगर ये फैमिली में से प्रियंका दी ही आती हैं, and she tells us all that from today, shut the hell up, and we don't want any other justice fight to continue. We will do what we want to. We are not going to support any of the people, any of the leaders of this movement supposedly, or any of the things that are happening in this justice fight. टॉपिक वहीं खत्म हो जाएगा. फिर आप जिस भी मंदिर का घंटा बजाना चाहते हैं बजा सकें, जिस भी चैनल पे जाके अपनी बकवास करना चाहते हैं कर सकें, जो करना चाहते हैं आप कर लें, बट you would have no support, you would have no reason to fight this justice key fight. So that's very clear to me at least कि सुशांत की सिस्टर है, फैमिली है, तो ये मूवमेंट है. अदरवाइज you, me, anybody else have nothing to do. Not even आप अगर ये सोचते हो कि भाई आप पीएमओ एचएमओ जाके वहां पर कोई झंडा गाड़ आएंगे, या आपको कोई रिपब्लिक टीवी या कोई नेटवर्क आके बुला के आपके इंटरव्यू लेके आपको जस्टिस दिला देगा, यू आर सैडली मिस्टेकन. द फैमिली इज द ओनली वन हु हैज द राइट, द एक्सेस, द प्रिविलेज टू गेट समथिंग डन. मीनाक्षी जी, वैलिड पॉइंट, वैलिड क्वेश्चन. आप ये जो कह रही हैं कि प्रियंका दी को लीगल एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट सच अब्यूजर्स, I'll give you another example around this. There are many abusers on social media. कुछ मेरे भी abusers हैं, कुछ औरों के भी abusers हैं, and those people have tried a lot of things. उसके लिए the challenge that becomes is it's a lot of wastage of time, wastage का हो, consumption का हो, बहुत सारा effort लगता है. Sometimes what people feel is, is it really worth my time? Is it really worth my effort? So I have no clue कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा. Okay,
Looks like, guys, I apologize. Looks like there was something that's happening in the chat message. So let me figure out. Agar some mistake has been done to some of the users, I apologize. I was just checking. Maybe one of the admins mistakenly kind of deleted somebody or some messages. So I apologize for that. Uh, okay, all right. So we'll figure that out. We'll fix it. Sorry about that. So please, that was my strong message around this. That please, for God's sake, if you don't want to do anything good for the movement, get out of this movement. Stop your negativity, and if you don't, then there will always be somebody who will speak about you, who will expose you. फिर रोना मत, विक्टिम कार्ड मत खेलना, और उसके बाद अपने ड्रामे मत शुरू करना, because there are some people, like I mentioned, who play the good cop bad cop, and those good and bad both जो खेलना चाहते हैं, वो समझते हैं बहुत हीरो हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. Unfortunately, they are already being exposed. So बी माइंडफुल ऑफ दैट. और जहां तक रही बात, आज सोशल मीडिया पे जो एक और शुरू हुआ है, प्रियंका दीज ट्वीट्स एंड ऑल दैट, बहुत कुछ उसकी वजह से देयर आर इश्यूज दैट हैव opened up, and all I can say about it, no matter who is here in this movement, big handle, small handle, uh, blue tick, not blue tick, whatever, uh, I personally will only stand with the family, and I just hope and pray that you also make the wise stand to be with the family. If something has been done in the past, which maybe हमें नहीं पता, and the family is aware of, and I'm sure by putting something direct or indirectly, uh, she is clarifying. It is very, very, very evident that we don't question right now. Uh, okay, I will have to check. Sorry, guys. Looks like there was some issue in the chat, and I will have to figure that out. I cannot do anything right now while we are in the session, so I will be able to do it after I'm done with this session. So I apologize to everyone or anyone who by mistake or by chance has been kicked out of the session or blocked, or their messages have been deleted. I apologize. Looks like there was some technical issue. Somebody accidentally kind of clicked on some of the buttons and it happened, so I'm really sorry. uh, you know okay, all right, so looks like we are trying to fix that. No, Deepti ji, that is not right. We cannot fight a case on behalf of the family. We cannot. So इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ. I will have to, like, for example, if I have to put a case, or somebody else has to put a case, first I have to give a power of attorney to that individual. So that is one. The second is the intention. Why is that individual fighting the fight? They also need to have the same motivation. So it's very difficult, it's very tough to get that done, and it's a lot of hassle. अगर आप ये केस देखें भारती का, जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिर भी 2 साल लगे, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल, जिसके अंदर the charge sheet is being filed now, and it takes a lot of time. तो वो जो एक इंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो any blood relative maybe can do something about it.
But you, me, anybody else as a warrior, we cannot fight. We cannot really fight the fight. Um so that's very clear and that's very evident. So anyways, so again, to sum it up, I really want to be mindful. Anybody who wants to join, I'll give you the remaining 9-10 minutes. But the whole point of this session was, please, please, please be very mindful around what you say on social media, especially around the family. They are already going through a lot. They are already suffering a lot, and they have a bigger fight to fight. ये चंगू मंगू वाली कोई सोशल मीडिया के ट्रोलर्स की फाइट नहीं है. दिस इज a cabal which has money, which has power, which has influence, and those are the ones that the family is fighting against. So please, for heaven's sake, for God's sake, for the whole entire movement, stop bullshitting around the family. And आगे भी करूंगा मैं. I'm gonna start taking some of the names if I have to. I'm not gonna leave anybody, because end of the day, these people deserve to be exposed, and we will continue to do that. All right, I'm gonna take Pradeep ji, and welcome Pradeep ji. Namaskar, and I missed you yesterday. I was hoping to see you, but thank you once again, Apubhi. Now you see it on the back, but I did a thank you for everyone who has contributed to this effort, including Sushant and, of course, all the people. So you have a major role to play as well. So thank you for all the support, blessings, and love all throughout. Good evening, Parunji, Good evening, sir. and possibly good evening to those who are watching this show from India. And anyway, good afternoon to some others, or maybe good morning to some people as well. तो वरुण जी, मैं पहले आपको बधाइयाँ दूंगा फॉर Thank you, योर अचीवमेंट. मैंने आपको उस दिन उसको आप देखे होंगे, आपका जो आफ्टर सेशन जो होता है नोट्स हाँ कमेंट जी. आता है, मेरा पहला कमेंट था मैं रिप्लाई कांग्रेचुलेशन करूंगा. का. अच्छे, मैंने देख तो किया था. आप शायद आपके पास मौका नहीं मिला देखने का. यू वर हाँ जी. रियली सो बिजी, आई अंडरस्टैंड दैट. Anyway, what I'm going to say at the moment, I'm happy. I'm happy because the picture is now more clear. We know who have the masks, who are not our friends, and who are the enemies, and who are trying to backstab and actually exposed. और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी ने क्लियर कर दिया है कि स्मिता पारेख का कोई रोल नहीं है. और उसके साथ मेरे को लगेगा और एक आदमी है, उसका नाम अभी लेने नहीं चाहता हूँ, मगर बोल देता हूँ, ये नीलोत्पल जो भी है, ही इज ऑल्सो मे बी नॉट सो रिलायबल. तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. हमें मालूम पड़ रहा है कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन दुश्मन के पैसा खा के बैठे हुए हैं, कौन खरीदे हुआ है, सोल्ड आउट है, बिका हुआ इंसान है. और जितने बिका हुआ इंसान कम हो जाएंगे हमारे लिए अच्छा है. दैट्स इट, क्लियर कट, लाउडर मैसेज फ्रॉम प्रियंका जी. मैं नमस्कार करता हूँ प्रियंका जी को. शी इज यंगर देन मी एनीवे, बट स्टिल आई रेस्पेक्ट द वे शी सेड अपफ्रंट. मैं उसको रिट्वीट भी किया है वरुण जी, शायद आपने देखा होगा. हाँ जी. So that is the clear message to everybody at the moment, that she declared these people are not more trustworthy anymore. उनको ट्रस्ट करने का जरूरत भी नहीं है. और अच्छा हुआ है, जो बुराइयां था निकल जाएंगे, जो गलत लोग थे हमारे साथ छुप के अंदर से हमको प्रहार करने वाले, उन लोग को बैंड बजा दिया है प्रियंका दी ने. दैट्स ग्रेट न्यूज and that is a very good thing for us. We know now where we stand, who are with us, and who are our, at the moment, not our friends at all. मैं इन्हीं भी तो नहीं बोलूँगा, but they are not friends with us. Probably they have sold out or they have some other particular purposes. इतना मैं बोलूँगा वरुण जी. और आई एम सॉरी टू से, आपके ऊपर जो पर्सनली अटैक हुआ है, इट्स वेरी बैड एट द मोमेंट. आप थोड़ा सावधान रहिएगा, बिकॉज यू मूव टू ए न्यू लोकेलिटी. और यूएस में भी ये गंदे लोगों का बहुत सारे कनेक्शंस हैं. There was a point of time, my one cousin brother, he moved to US and he was having some issues with some rackets in India. मैंने उनको भी सेम चीज बोला था कि keep something differently. ये still it is a good country, but there are so a lot of bad people and connected with Bollywood as well. So please keep your family in the safe side. और जरूरत पड़ेगा तो आप
जिसको हम बोलते हैं ना वर्किंग हॉलीडे, ये भी सीरियसली आप सोचेंगे. इफ यू नीड सम मेंटल हेल्थ इशू लाइक कॉप अप विद द क्राइसिस, फैमिली के लिए पर्टिकुलर, मैं जानता हूँ यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मगर आपकी वाइफ, आपकी बच्ची, उनके भी मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ इशू. तो उनके लिए भी, उनके ट्रॉमाटाइज कुछ ना हो, अगर जरूरत पड़ेगा तो यू कैन टेक ऑफ एंड द थिंग विल रन ऑन. नोबडी कैन स्टॉप अस. वी आर अनस्टॉपेबल until justice is delivered. इतना मैं बोलूंगा. हर हर महादेव, जय भारत, और मैं बोलूंगा जय हिंद. That's all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. All this. I will leave now. I'll allow Sure. the other people to come and talk, whatever. Sure, sure. Thank you so much. Hanji Rubal ji, welcome and good to see you. हाँ जी, good morning. नहीं, good afternoon rather. और कैसे हो? बहुत बढ़िया, हाँ. बहुत अच्छा. अरे मैं सोच ही रही थी कल भी मेरे मैसेजेस, मैंने इतने सारे मैसेजेस किए. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो. और Thank you. कल भी नहीं जा रहे थे मेरे मैसेज, और आज भी मैंने कहा यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कुछ तो आता है, वरना मतलब आप हाईलाइट कर देते हो, ऐसा लगता है मिल गया मैसेज से. तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए मतलब मेरे मैसेजेस पहुंच ही नहीं रहे शायद. तो मैंने कहा चलो आ ही जाते हैं, बात ही कर लेते हैं. डायरेक्ट बात ही कर लेते हैं. मैंने कहा चलो. नहीं, थैंक यू. आपने बता दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी डोंट इवन गेट टू नो कि क्या हुआ. सही बात है. पहले भी हो चुका है. हाँ, वो सामने वाला सोचता है क्या हुआ, मेरे मैसेजेस रीड ही नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसे. और क्या, सही बात है. अपने तो ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इस मूवमेंट में लगे हुए हैं. देखो हम लोग, पता है वरुण जी, मैं आपको सही बात बताऊं, हम लोग वो हैं, हमको कोई इससे कुछ फायदा नहीं होगा. हम सिर्फ अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आए हैं कि यार कुछ गलत हुआ है तो क्लोजर होना चाहिए बस. हमको ये क्लोजर मिल भी जाएगा तो हमारी लाइफ में बस यही फर्क पड़ेगा कि हाँ क्लोजर मिल गया हमें. बाकी हमें कोई किसी चीज का बेनिफिट नहीं होगा कि हमें कोई फायदा हो रहा है या हम कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है या कुछ भी. मतलब हम लोग सारे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग पता नहीं शायद इमोशनली बहुत ज्यादा, या तो एसएसआर की सोल ने ही हमें ज्वाइन कर दिया. मतलब बहुत ज्यादा ये चीज हो गई है, मतलब इसलिए हम लोग क्लोजर के लिए लड़ रहे हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें. तो हम लोग वो बंच बन गए एक तरह से. तो आज अभी जैसे मैंने ट्वीट तो देखा नहीं, मैं तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन देखा, मतलब अभी जब मैं फटाफट आ गई, मैंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, वरना आप तो ऐसे आते नहीं हो एकदम. मतलब तो मैं आज बहुत हो गया था. आज मैं वैसे तो नहीं आने वाला था, आज कल मैं सेशन करने वाला था. हाँ जी. बट आज बहुत ज्यादा मैं जहाँ था वहां पर मेरे को बहुत मैसेजेस भी आए. बहुत सारी ऐसी चीजें मैं पढ़ भी रहा था ट्विटर पे, क्योंकि आज एक जो भी ट्वीट हुआ है और इट इज रियली लाइक, उसके बाद नेगेटिविटी इतनी फैल गई, और वो सम ऑफ द कीड़े मकोड़े कहता हूँ, राइट, वो कीड़े मकोड़े भी जाग के वापस आ गए और उन्होंने और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे दैट, जैसे होता है ना फैमिली में होता है, बिकॉज वी आर वन एसएसआर वॉरियर फैमिली, कि अगर कुछ होता है तो वी शुड ऑल गेट टुगेदर and we should support each other. So यहाँ पर प्रियंका दी is definitely our family. We are the warriors for her. Absolutely. उनकी वजह से तो उनकी वजह से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत, क्योंकि ऐसे लगता है कि चलो यार एसएसआर की सिस्टर हैं तो हम, अब जैसे मैं जैसे दिवाली पे कितने लोगों को मिली, तो जैसे बोलने में फिर आ जाता है कि उनकी सिस्टर्स लड़ रही हैं इसलिए हम भी उनके साथ लड़ रहे हैं. वरना बंदा कहता है लो तुम क्यों लगे पड़े हो. मतलब आपको पता ही है ना माहौल लोगों का कैसे बोलते हैं, मतलब तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम क्यों लगे पड़े हो. अब बंदा एक स्ट्रेंथ से, मैंने भी जैसे कॉन्फिडेंटली बोला कि उनकी सिस्टर्स बेचारी लड़ रही हैं तो हम भी उनके साथ लड़ रहे हैं, मतलब ऐसे. तो वही बात है, वरना तो कोई सुनने को तैयार नहीं. सब कहते हैं विलापंती क्यों कर रहे हो. मैं कहा नहीं यार, पता नहीं कोई सच में, आप मानोगे नहीं, मतलब आप भी बोलते हो ना, जो आप बोलते हो वही मेरी भी फीलिंग्स है कि पहले हम कितना ज्यादा एसआरके को कितना ज्यादा मानते थे. मतलब ऐसे लगता था कि यार उसने पिक्चर में काम किया तो देखनी है. मतलब मेरे एक टाइम पे डायलॉग था कि मैं तो सिर्फ सुपरस्टार्स की पिक्चर देखती हूँ, ऐसे बोलती थी मैं. और आज की तारीख है कि मन ही नहीं करता, मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था उस पर भी मन नहीं करता कि चलो झूठ फूट का ही देख लें. मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कितने फेक हैं यार ये लोग. आई स्वेयर ये चीज तो आ गई है, ये चीज तो कॉमन लोगों में आ गई है. मतलब हमने अभी घर शिफ्ट किया था, मैंने अपना टीवी ही नहीं लगाया. मैंने कहा टीवी देखना क्या है, टीवी में आएगा क्या. मतलब टीवी ही नहीं लगाया. अब आई स्वेयर मतलब बहुत ज्यादा हो गया.
तो मैंने कहा चलो यार, यही सब बातें मैंने चैट पे लिखी थी, तो मैंने कहा चल फटाफट जाके बोल देती अच्छा, हूँ। नहीं और थैंक क्या। यू, थैंक यू, बल्कि हाँ आपने बताया अब इस हाँ सेशन के जी। बाद, हालांकि हम एक छोटा सा हाँ नहीं स्पेस नहीं। जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत हाँ सारे जी। लोग चैट में हाँ कह रहे हैं, बट उसके बाद आई एम गोना लुक एट इट कि हाँ होपफुली कोई ऐसा इशू ना हो, हाँ और हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समटाइम्स हाँ समथिंग कोई हैपेंस, दिक्कत तो नहीं। थैंक यू हाँ, अगेन कोई टू बात ऑल नहीं, एंड यूट्यूब भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है अभी। एक्चुअली यूट्यूब हाँ, भी बहुत ज्यादा अपडेट हो रहा है ना, तो उस वजह आई से नो भी थोड़ा बहुत हो कुछ जाता हो है रही कई हैं बार। चीजें, हाँ, सो और फिर आपने मॉडरेटर्स भी हैं, आपके एडमिन्स भी है ना, तो कई बार गलती से भी कोई क्लिक वगैरह हो जाता है। हाँ, कोई करेक्ट बात करेक्ट नहीं। हाँ, करेक्ट, आई नो। चलो ओके, टेक केयर। थैंक यू, थैंक, और टेक आप केयर। अभी बीच में गायब भी हुए थे, तो मैंने सोच रही थी क्यों गायब हुए, तो आरएस जी से मेरी बात हुई थी, कहते मतलब ठीक ठीक ऐसे ही ब्रेक लिया है, तो मैंने कहा ठीक है चलो, करेक्ट मैंने इसमें करेक्ट, ज्यादा हाँ डिस्टर्ब वो नहीं एक किया। पर्सनल कमिटमेंट ओके। था जिसको मेरे को हाँ पूरा करना था, हाँ, और मैं नहीं वो नहीं, करके वापस बहुत आया। वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी थैंक वेल, यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय थैंक बाय। यू, टेक केयर, हाँ जी। ऑलराइट। All right. So, एक बार फिर से, guys, just before I wrap it up, yes, I'll do the space now, as many of you are suggesting. We will do the space, quick, short space, 30 minutes का मैं वहाँ भी करता हूँ. इसके बाद immediately right away, and so you all can join जो लोग Twitter पे हैं, because this thing really needs to be amplified and really needs to be talked about. कि end of the day कुछ भी हो, we all stand with the sister, with the sisters, with the family, and we will continue to talk and support the movement at no cost. I again, Ashish ji, मुझे नहीं पता, और निपुण पाजी, thank you for your message. मैं पढ़ता लिया, दसांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and we'll talk about it. ਹੈਗੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੂ ਮੰਗੂ ਜੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ करना है. So एंड सॉरी फॉर एवरीवन, आई एम टॉकिंग टू इन पंजाबी, क्योंकि निपुण जी ने पंजाबी में लिखा था, तो उनको रिस्पॉन्ड भी मैं पंजाबी में कर रहा हूँ. सो निपुण पाजी, we'll definitely talk about it. So okay, before I end, I see Chetali as well. So hello Chetali, and welcome to this live. Hi, Varun. Hello. Since the session is all about family, so before you end it, I just would like to add two to three lines. Can I Sure, go ahead? please, please. Okay. See, the thing is that I apologize first of all. थोड़ा सा मेरा voice broken है क्योंकि थोड़ा सा मुझे ठंडा लग गया है actually. But anyways, wanted to say this कि इस कैंपेन में जब फैमिली फोर फ्रंट में नहीं आए थे, ऑन दैट टाइम मेनी पीपल रेज द क्वेश्चन, फैमिली सामने क्यों नहीं आ रहा है, फैमिली सामने क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग सब देखे थे। अब फैमिली जब सामने से आके फाइट कर रहे तब भी प्रॉब्लम, तो फैमिली सामने आए तो भी प्रॉब्लम, नहीं आए तो भी प्रॉब्लम। Yep. एंड बिफोर फ्यू मतलब पिछले कुछ दिनों से वी हैव सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ टारगेटिंग हैज हैपनिंग इन ट्विटर. The most like lowest level I have seen, yesterday only I have came across some of the tweet. She has certain health issues maybe. uh, People who are targeting, they are pointing on her health issues. इसको लेके भी they are tweeting, they are telling her bedridden and all this kind of stuff. So kindly let's not stoop down to this level at least. I mean, why we are here for? Are we here for fighting justice for Sushant, yeah, for targeting the family? As a simple question I'm going to ask. If we here really here for, अगर हम लोग सच में जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, so let's pay the minimum respect to the family, राइट? फैमिली इज गिविंग स्पेस टू एवरीवन. आपको ट्वीट करना है, आप अपना कंटेंट लिख के ट्वीट कीजिए. यू हैव योर ओन फ्रीडम. इफ यू वांट टू डू ग्राउंड वर्क, you can do groundwork. They have given liberty to everyone. You can put your contribution in all the bestest way possible. After that also they are getting targeted, and it's not for the first time. I mean, it's happening since many few days. That's the only reason, today the tweet has came in forefront. सो एंड और एक चीज, इस कैंपेन में ना जब भी चीजें स्मूथली चलता है तभी ये सब रकस क्रिएट होता है. ये इस कैंपेन में शुरू से हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं. जस्ट टू डाइवर्ट द कैंपेन, just to shift the main focus from the campaign to somewhere else. Basically the pre-planned agenda happens. So let's not do that kindly, who all are doing this. We वैसे भी, there is no fruitful result and outcome come from CBI. Let's put our effort in the campaign. अगर सच में genuinely हम लोग सुशांत के लिए है, तो फैमिली को टारगेट करके is not going to fetch anyone anything.
And one thing, this campaign is not about gaining leadership or hijacking it. It's a pure organic campaign जहाँ पे सब मिलके selflessly justice के लिए fight कर रहे हैं. Let make it very clear and evident. राइट. सो इफ वी कॉलिंग आवर सेल्फ, लोग यहाँ पे टैग लगा के बैठे हैं एसेसारियंस, एंड वहां पे दे आर यूज टारगेटिंग फैमिली using below the belt language. I mean, how you could tell yourself that you're a cesarean? You're targeting his own sister. I mean, have you completely lost it? No. This thing that should not be done. Whatever happened today, I think ये शायद ये tweet कुछ दिन पहले भी आना चाहिए था. So people can understand, what is the real ground. So this much I wanted to convey. If we are really here for family, then let's pay the minimum respect to family. अगर वो भी देना नहीं है, then kindly focus on your own work, for which purpose you have joined the campaign. Targeting family using below the belt language for her is not going to fetch anything to anyone. Rather, it's exposing your real color. And it's not for one people, many people have came together from past few days. They have done below the belt act. I have seen, क्योंकि कल वरुण आपके लिए मैंने एक थ्रेड लिखा था, उसका नीचे भी कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने देखा. आई जस्ट डोंट नो, आपने भी देखे होंगे शायद. सो आई एम जस्ट स्पीचलेस. So let's not stoop to that level. Let's purely focus on the campaign. On one thing, आप लोग अगर फैमिली को टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, आप सुशांत को रेस्पेक्ट दे रहे हो क्या? ऊपर से ना वो सब देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो. So don't do that kindly. अगर कैंपेन में करना है, then kindly purely focus on your work, and kindly don't target family using filthy and stoop down language. And किसी का हेल्थ को लेके तो कोई दुश्मन भी किसी को टारगेट नहीं करता है. You guys are telling her about that bed ridden stuff and all. What is this? काइंडली डोंट डू दैट. आई डोंट नो, शायद लोग तो यहाँ पे सुनेंगे नहीं, बट मुझे ये बोलना था तो मैंने बोल दिया. आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यस्टरडे, क्योंकि एक तो मैंने वरुण का जो इंसिडेंट देखा कल. सेकेंड थिंग, आई केम टू नो सर्टेन ट्वीट्स जहाँ पे किसी का हेल्थ इश्यूज को लेके लोग बात कर रहे, लोग यहाँ पे इतना नीचे गिर गए हैं. सो काइंडली लेट्स नॉट स्टूप डाउन टू दिस लेवल. जो जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट का जो डिग्निटी है, जो ग्रेस है, लेट्स continue maintaining that. That's all I wanted to say, Varun. Thank you. Very well said, and thank you again, Chitali. Um, very good points and very valid points. And I would encourage, if you have some more time, I have just pinged the space URL because some people wanted to do a space. I will host that space in the next 10 minutes. Or वहाँ पर भी, I would love each one of you to come and speak to show our support and solidarity for the family, because it's very important कि हम लोग सबको बताएं कि we are not here for time pass, या कोई यहाँ पर कोई मौकरी नहीं चल रही है. Very serious movement is going on, and we really need to be very sensible and stand strong with the family. So do join, and thank you so much always for being the grounded person for all of us. All right, Yush, please go ahead and welcome. नमस्ते आपको. नमस्ते. चैतन्य आपको नमस्ते. सबसे पहले ये हाई टाइम है कि हमें फैमिलीज को सपोर्ट करना है, और हमें ऐसे लोगों को भी जानना है जो स्मिता पारक जैसे टाइप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि हम फैमिली के सपोर्ट में हैं, लेकिन करते किसी और को. ये भाई, तुम लोग सुशांत के मूवमेंट में, जस्टिस मूवमेंट में आए हो कि मजाक बनवाने आए हो? ये मजाक नहीं है, इट्स सीरियस. कोई छोटा इंसान आदमी नहीं गया इस दुनिया से, बहुत बड़ा नाम है सुशांत. और इस तरह से अगर तुम लोग मजाक बनाओगे तो नहीं मिलेगा जस्टिस. ऐसे इस तरह से नहीं करना चाहिए. मैं तो यही कहूँगा ऐसे लोगों को. Yeah, absolutely. So वरुण, yep. if you have time, मैं क्या और 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Sure. Please go ahead. Okay. I just wanted to put a point out here. Or people, family, you can't even say that सिर्फ ट्विटर में है. From the month of December 2021, we have seen family around December, January, March. कितना एक्टिविटी हुआ है दिल्ली में. They have came, they have joined, they have be there in the ground.
एंड जो टैगलाइंस आती है ट्विटर में, इट्स नॉट दैट एनी काइंड ऑफ मोनोटोनस टैगलाइन, सिचुएशनल बेस्ड टैगलाइन आती है, क्योंकि मैं खुद टैगलाइन टीम में 1.5 साल काम किया, सो आई नो हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, सिचुएशन बेस्ड में कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जब से टैगलाइन आया है, जब से फैमिली टैगलाइन दे रहा है, फैमिली भी तो सिचुएशनल बेस्ड टैगलाइन दे रहा है। दे आर रिक्वेस्टिंग CBI to speak up. They are requesting PMO, HMA to speak up. What else they can do? They are doing their best. And one thing, ये जो यहाँ पे चीज है कि why family not approaching SC, they are trying their level best. And we know that, right? ये जो CBI is not answering people. CBI CBI report PMO end of the day. So in order to fix an appointment to them, the acceptance should be coming from the department of PMO. So and it's not it's not an easy fact that they will give the invitation for everyone. Okay, so there are procedures back end में, is not so easy. Questions करना बहुत easy होता है, why they are not doing this, why they are not doing that, but does people understanding the technicality and the procedure behind it? So अगर पता नहीं है तो then let's kindly don't target them. And one thing, of there is a thing that can't people ask them question? Yes, of course, everybody is free to ask them questions, but there is a way to ask them questions. There is a thin line between asking them question and triggering them, accusing them. राइट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन करने के आड़ में लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। सो दिस थिंग शुड नॉट बी डन। ओके, हम लोग इतना ग्रेस, हम लोग बोलते हैं कि वी आर अर्डेंट फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, हम लोग टैग ट्वीट करते हैं, वी हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत। डू वी रियली हैव दैट? अगर सुशांत आज होते हम लोग के साथ, उनके सामने क्या हम लोग ये बिहेवियर कर पाते फैमिली के साथ? मतलब whoever is listening, you can give the answer in the comment section. I don't think so. Okay, so let's be sensible right now. Let's act sensible, and जो minimum respect है वो तो दिखाइए फैमिली के ऊपर। this much everybody can ask questions, but questions करने के लिए, questions करने के आड़ में accuse मत कीजिए। this is not the way, because things are not so simple. ऐसा नहीं होता है किसी का एक कॉल में PMO अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा, that please come and talk to us. There are procedures, there are time taking procedures, so you need to understand everything being logically. ठीक है, अगर हम लोग SSR वॉरियर्स है, अगर हम लोग जेन्युइनली रेस्पेक्ट करते हैं SSR को, तो काइंडली उनका फैमिली को भी रेस्पेक्ट कीजिए। डोंट ह्यूमिलिएट देम डेली बेसिस। एंड एक चीज मैं बोलूंगी, ये चीज एक दिन का नहीं है वरुण, दिन पर दिन होता गया है from month to month. After that only the tweet has came out today. Okay, तो देखिए, everybody is human being out here. सब कोई का एक लिमिट होता है पेशेंस का, सो डोंट ट्रिगर एनीवन्स पेशेंस लेवल। अगर सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको खराब नहीं लग रहा है। ठीक है, प्लीज पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ हर एंड थिंक वंस। वो प्रियंका दी तो ग्राउंड प्रोटेस्ट में जाते हैं, एक्टिविटीज में जाते हैं, एवरी डे मॉर्निंग में 7:30 को वो टैगलाइन डालती है। जब हम लोग थे टैगलाइन पे, हम लोग 9 बजे रिलीज करते थे टैगलाइन, मॉर्निंग का 9 बजे और इवनिंग का 8 बजे। अभी तो अर्ली टैगलाइन रिलीज होता है आप लोगों के लिए 7:30 को। और टैगलाइन को अगर बनाना भी है, उनके लिए भी 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रोसीड्यूर्स होता है उनको बनाने के लिए, उनका वर्ड लिमिट रहता है, स्पेसेस काउंट करना पड़ता है, उनके लिए भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि वो पर्सन टैगलाइन देने के लिए भी एवरी डे शी हैव टू वेक अप अर्ली, तो ही मॉर्निंग में टैगलाइन आपको दे पाएगा। एंड शी इज डूइंग दैट थिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। So whatever, in spite of all the grief, all the saddening part, she is still there with us. She is still fighting for the cause. She is giving her best. So kindly pay the minimum respect to the person. Okay? Let's all behave like a human being. Let's not stoop down the lowest level kindly. This much I wanted to say. Thank you so much, Varun. Yeah, absolutely. All right. Thank you so much. I see Anam join as well. Anam, please go ahead, and then we'll wrap it up to go to the space.
Hi Varun, hi Chitali, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat. And as you know, I'm a SSR warrior. I'm away, but I still don't want to be away from the movement, and I just want to keep supporting each SSR warrior, and so that we get 302 for Sushant, and we give other people justice as well, because with Sushant, other people are linked with him, and then this fight won't stop. We should not stop. Just when we get justice for Sushant, we have to. There are other people waiting for justice as well. So we have to keep rowing and keep positive. Then we have to give justice to everyone. Thank you very much, Varun. You can wrap it up. Thank you. Thank you so much, Anam. Always appreciate that. All right, guys, I am gonna end this session, and I'm gonna start the space. आप लोग please वहाँ भी आएं, and we'll talk a little bit more, and then we'll continue this. Thank you so much, everyone. Really appreciate that. Again, before I wrap this up, very loud and clear message. We came here for Sushant. That's the most important thing. Sushant, Sushant's sisters, Sushant's family, they are our responsibility, and we definitely need to be there for them till the very end. Uh, वैसे तो मैं रैप अप कर रहा था, बट आई सी प्रदीप जी जॉइन, सो लेट मी जस्ट टेक हिम. हाँ जी, प्रदीप जी, आप कुछ कहने आए हैं? हाँ वरुण जी, आपको हाँ जी. बहुत बहुत बधाई आज के सेशन के लिए. पहले बात है. दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रियंका जी के लिए. प्रियंका जी एंड एसएसआर फैमिली, कि आप लोग कोई कंफ्यूज टाइम होइए, दुनिया आपके साथ है. द वर्ल्ड इज योर्स. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वीट रिजल्ट. रिजल्ट निकलने वाले हैं, बस थोड़ा वक्त की जरूरत है. वरुण जी, हमें थोड़ा वक्त की जरूरत है, क्योंकि कोई हमें रोक नहीं सकता. एक वो जो मार्टिन लूथर किंग का डायलॉग था ना, वी शैल ओवरकम. आपकी कंट्री में रहने वाला कोई आदमी है, हाँ जी, हाँ जी. मार्टिन लूथर किंग, उसका मैं बताऊं, मैं बोलूं? हाँ जी, प्लीज. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. We have peace in my heart. I do believe We shall shall overcome. overcome someday. The Lord looks down. The Lord looks down from the holy ark. तो वही मैं कहने वाला हूँ कि वो ऊपर से भगवान देख रहा है. मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ. हमें बेवकूफ ब्राह्मण. वरुण जी, मेरे को माफ कीजिएगा. मैं पाठक, मैं स्टूपिड. पाठक लोग स्टूपिड होता है कि पैसा कमाने का धंधा उनको आता ही नहीं है. Unfortunately, I'm a mortgage broker. Those who are living in the first world countries, in Europe, or US, or Canada, they can understand that the mortgage broker is talking about something like not making money. जो इंडिया में है उनको मैं माफी चाहता हूँ. आप मेरे जोक समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे एक मिनट का काउंट होता है. कॉल सेंटर वाले लोग बैठे हुए हैं, और एसी क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले टीम हमारे बैठे हुए हैं, काम करते रहते हैं. इन द मीन टाइम, समटाइम मेरे को मौका मिलता है तो मैं वरुण जी के शो पे आ जाता हूँ. आई लाइक वरुण कपूर, आई रेस्पेक्ट हिम, आई लाइक प्रियंका जी, एंड आई लाइक द वे सुशांत सिंह एक्सपोज्ड द क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया. और जो मेरे को पहला बार सुन रहे हो, मैं एक चीज बता देता हूँ. वरुण जी मेरे को पूछा था ऑल्सो, वरुण जी, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन. माई पापा वॉज इन इंजीनियरिंग स्कूल in 1931. We were jailed for 7 years. 5 plus 2. 5 plus 2, 7 years in jail because he was a follower of Arvind Ghosh. Arvind Ghosh was the idol of Subhash Chandra Bose. तो मैं वो बेकार आदमी हूँ, बकवास वाला आदमी हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ, उन फैमिली से आता हूँ. I have the heritage of stupidity, for justice, for honesty. आज के शो पे मैं आपको बता देता हूँ कि जस्टिस हमको मिलने वाला है. कोई हमें रोक नहीं सकता. और हमारे साथ, मेरे को लगता है हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट हमारे साथ हैं. मे बी दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन एट द मोमेंट, मे बी दे हैव सम इश्यूज एट द मोमेंट, बट जय हमारे होंगे. सो वी विल विन ओवर द क्रिमिनल्स. और जो गलत काम कर रहे हैं
उनके दुकान बंद होने वाला है, बॉलीवुड तो खत्म होने वाला है, जो हम लोग प्रेडिक्ट कर दिए थे। मैंने एक बार बताया था आपके शो पे, बॉलीवुड का Yes. दुकान बंद होगा, इनको हम भीख मांगे बनाएंगे। इट इज हैपनिंग बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग फॉर अस। दिस इज द डिसीजन फ्रॉम द हॉली प्लेस, ऊपर से हो रहा है। सारी जनता आपके साथ है, बस बाकी काम हमें करना है। तो वरुण जी, आप काम करते रहिए। I will appear some point of time Up. when I Fine. require. That's all. बताइए। Abs- And thank you प्रियंका जी। मैं प्रियंका जी Thank को you. थैंक बोलूंगा। Thank That's you. all. Thank you. All right. Thank you. And if she, another sister, just a second, she's listening from probably from USA, from Los Angeles. I would say you are blessed people. आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे जेनेटिकली। और ये होता है फैमिली का जो अपबिल्डिंग होता है। दैट्स व्हाई यू गाइस आर ब्लेस्ड। नोबडी कैन स्टॉप यू अनलेस यू अचीव द टारगेट। जब हमें यहाँ पहुंचना है, जब तक हमने वसूल नहीं करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये स्वामी विवेकानंद का डायलॉग है। वंस यू आर फाउंड द सेंटर, नो वन कैन स्टॉप यू। वरुण जी, ये मैं बोल के मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you. All right, थैंक यू। guys. आई I'm लीव gonna नाउ। end this. आई लीव I'll नाउ। start the space now in the next 2 minutes. Space पे मिलते हैं one last time. Stand with the family. Stand with Priyanka Di, and let's take this movement to the next level. Let's clean up. मैंने शायद ट्विटर पे भी लिखा था। I think ये मंथन है, ये क्लीन अप है जो हो रहा है। And thanks to Priyanka Di for doing whatever she is doing. More power to her, more power to her family, and let's keep on supporting her in this fight for justice for Sushant. Together we will. जैसे अभी प्रदीप जी भी बोल के गए, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Justice for Sushant Singh Rajput. Jai Hind, Jai Bharat. I'll talk to you guys in the space now. Bye bye.